शोल्डर कर ले भाई। 17.5 हाथ ऊपर कीजिए। अरे कीजिए ना। सीना लिख ले भाई। 35 नहीं 34। 34 की 35। सर थोड़ा फुलाइए फुलाइए फुलाइए। 34.5 लिख ले। हाँ बेटे। पापा मैंने बैंकिंग का एग्जाम क्लियर कर लिया। आता हूँ बेटा। सीना 40 कर दो। हाँ? जिम विम ज्वाइन कर लिया है क्या 24/7? बेटे ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और बैंकिंग एग्जाम क्लियर किया। अब जब बच्चे तरक्की करते हैं ना तो बाप का सीना तो चौड़ा हो ही जाता है। सीना 40 कर दे। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी जैसे अनेक कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। Hi and a very good morning to all of you. Welcome back to our daily current affairs series at regulatory bodies Adda 247 channel. So I have come up with a new plan, a new pattern for you all to ना ही आपको ये series देख के retain करने में help होगी, but it will also help you in taking down notes, segregating them and revising them very very quickly just before the examinations. तो ऑफ कोर्स इसका पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, सो यू कैन यूज इट स्मार्टली बिकॉज वर्क हार्ड इज इम्पॉर्टेंट but working smart is even more important if you want to crack any exam in today's time. So 28th June 2022, it is the birth date of late Prime Minister late Prime Minister PV Narasimha Rao. PV Narasimha Rao was the Prime Minister of a country at a very, very crucial time. He is one of the most celebrated Prime Ministers, other than, of course, all of our Prime Ministers are celebrated, but as far as the economic transformation of India is concerned, whenever we read about, the Indian economic crisis of 1991, whenever we read about liberalization, privatization and globalization reforms, the only person we think of, first person we think of is Mr. PV Narasimha Rao. Although there were many people in the economic team of his cabinet that suggested the liberalization reforms, he was the steering guy. He transformed the Indian economy to a great extent. So there is a quote by him that I'm sharing today. The quote by Mr. late PV Narasimha Rao: when I don't make a decision, it's not that I don't think about it. I think about it and make a decision to not make a decision. इसका मतलब क्या है? Confusing लग रहा होगा, right? It means that if you want to decide and act on something, of course, a significant amount of process into thinking about it goes into it. But at the same time, deciding not to act on something, deciding not to do something, that also requires a significant amount of thinking. मेन इसका क्राइटेरिया, मेन इसका मतलब यही है दैट वेदर यू डू और यू डोंट डू समथिंग, always ensure that your actions are very well thought out on a long term basis, right? सो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप सोच समझ के अपने एक्शंस लो, सोच समझ के अपने डिसीजंस लो, वेदर इट इज़ द इंडस्ट्री यू आर चूजिंग टू गेट अ जॉब इन, वेदर इट इज़ द एग्ज़ाम यू आर चूजिंग टू प्रिपेयर फॉर, चाहे आप कोई बैकअप प्लान या कोर्स या डिग्री या ऑप्शनल एनीथिंग नॉट इवन रिलेटेड टू एजुकेशन करियर बट एनी अदर थिंग इन लाइफ, ऑलवेज वेदर टू डू और नॉट टू डू, both the things require considerable thought, due process of thinking, and then they are to be acted upon. This will minimize the risk of errors and mistakes, because life is already very short, time is already very constrained, and you can, as you grow older, you have less and less scope for making wrong choices and wrong decisions in life. So always ensure
So this is a very, very inspiring quote that I found by PC Mahalanobis. Here is a piece of information, sorry, not PC Mahalanobis, but PV Narasimha Rao. I'm so sorry about that. A short information about our late president. He was born on 20th of June 1921. Okay, he was an Indian lawyer and also a politician. He served as prime minister from 1991 to 1996. Okay. It was a politically significant phase in the office, politically as well as economically, as we discussed major economic transformation, right? First prime minister Hindi speaking, non Hindi speaking से ये पहले prime minister थे. He hailed from Tamil Nadu. So right, so we have already discussed about it. Do read more about him, do get inspired. Very, very आपको खुद से initiative लेना चाहिए to read about our leaders, to read about important political and economic personalities from our country. Build upon your knowledge as well, and not only building upon your knowledge but also get inspired by their stories. Get inspired by their hard work and turmoil in every field that they go. So this was the motivation for today. And yes, selection is the destination, but I think your ultimate destination is to be a better human being in life, a better person in life who adds value to your family, to your friends, to society and to the world. Okay, and of course selection is the destination. So let's start with the current affairs show. So let me brief you through the changes that I've made in the pattern of the slides that I present to you, and through which I try to teach you current affairs. Okay, so I have actually divided the entire slides into the syllabus, the main heads of the syllabus from the current affairs section or the general awareness section that can be asked in the examination, right? So important national and international events समझ में आ जाएगा जब हम लोग कवर करेंगे कि ये इतना बड़ा सा जेनेरिक टॉपिक है, एक्चुअली में जेनेरिक टॉपिक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, बट क्या कवर हो सकता है क्या नहीं कवर हो सकता है, वी विल सी. हम लोग देखेंगे इसमें कि पॉइंट क्या है एक्चुअली. सो लेट्स पहले देख लेते हैं डिवीजन. हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? लेट्स हैव अ लुक. As you can see, the news is very interesting for today. Economy, banking and finance एक section हो जाएगा. Of course, economy, banking, business and finance. So economy and finance related जितनी भी news है वो आपके इस section में आपको पढ़ाई जाएगी. नेशनल एंड इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, जैसे कल हम लोगों ने कवर किया था ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के कोई नए स्टैंडर्ड्स या परफॉर्मिंग, नीति आयोग ने कोई नया इंडेक्स लॉन्च किया, तो उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे नेशनल एंड इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस में. ऐसा करना क्यों इम्पोर्टेंट होता है? सी एग्ज़ाम प्रीलिम्स में तो आ ही सकता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा हद तक आपके मेंस आंसर राइटिंग, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हद तक ये हेल्पफुल हो सकता है. सो नेशनल एंड इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेजर अपडेट्स, जैसे कि अभी हम लोग उसको भी कवर करेंगे. GSAT-24 सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च करी है, दैट विल बी कवर्ड ओवर हियर. आई विल कवर इट इन द अपकमिंग स्लाइड. स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ एंड स्टैटिक जीके में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम लोग पहले ही अपने सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, सो देयर इज़ नो नीड टू रिपीट दैट. आई एम जस्ट ब्रीफिंग यू थ्रू द न्यू अप्रोच that I will be undertaking to teach you current affairs and present you with the slides. Okay, तो start करते हैं पहले क्वेश्चन से. The first question is asking you, मिस्टर परमेश्वरम अय्यर, नीति आयोग पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक के न्यू CEO अपॉइंट हुए हैं, मिस्टर परमेश्वर अय्यर. सो मिस्टर अमिताभ कांत हैज़ बीन द CEO ऑफ नीति आयोग सिंस 2016, एंड एज पर द मैंडेट CEO ऑफ नीति आयोग का जो टेन्योर होता है इट इज़ फिक्स्ड फॉर 2 years. बट व्हाट हैपेंड वाज हिज टेन्योर वाज एक्सटेंडेड ऑन अ प्रोलॉन्ग्ड बेसिस. पहले 2018 में उनका टेन्योर 2 साल तक एक्सटेंड हुआ टिल 2020,
And in 2020 his tenure was extended, sorry, till 2021 his tenure was extended, and 2021 his tenure was extended for one more year, that is in 2022. Okay, so दो बार मिस्टर अमिताभ कांत का टेन्योर एक्सटेंड हुआ, दैट इज वाई टिल डेट ही वाज द सीईओ ऑफ नीति आयोग. नाउ द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग is a 1981 IAS batch IAS officer from the UP cadre, Mr. Parameswaram Iyer, and the question is asking you, who appoints the CEO of नीति आयोग? ओके, सो आप लोग एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि जनरल अवेयरनेस या किसी भी सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर इन द आरबीआई एग्जामिनेशन. नाउ बिकॉज ऑफ दिस ग्रेजुअल इंक्रीज, इस इंक्रीज की वजह से बेसिकली हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, the level of questions are becoming more difficult, more complex. जैसे आप देखोगे कि जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आता है, कुछ हद तक हमको सेम पैटर्न आरबीआई में भी आज की डेट में रिफ्लेक्ट होता नज़र आ रहा है. तो गॉन आर द डेज व्हेन यू कीप रिलाइंग ऑन वन लाइनर एमसीक्यूज. यू हैव टू ब्रॉडन अप योर प्रिपरेशन, यू हैव टू ब्रॉडन योर होराइजन्स, यू हैव टू ब्रॉडन द एंगल विद विच यू स्टडी जनरल अवेयरनेस. इसीलिए कंटेंट भी बढ़ेगा आपका, context भी बढ़ेगा with which you read current affairs. The context, by context I mean you have to change your pattern from one liner bullet points to whole conceptual study. नीति आयोग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क क्या, आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा. So because this is important from the exam point of view, because anything can be asked as we have seen in 2022 paper. तो द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कि नीति आयोग के सीईओ को अपॉइंट कौन करता है. सो द सीईओ ऑफ नीति आयोग इज अपॉइंटेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नॉट द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट डजंट अपॉइंट इट, नॉट द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट डज नॉट अपॉइंट इट. चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग, अगेन according to the administrative structure, the chairperson of the Niti Aayog is the Prime Minister himself. But who appoints the CEO? The CEO is appointed by the Prime Minister. मतलब कि Prime Minister अपने Prime Minister की कैपेसिटी में CEO अपॉइंट करता है नीति आयोग का. When he is appointing the CEO of नीति आयोग, he is not the chairperson. He does not appoint the CEO of नीति आयोग in the capacity of him being a chairperson of नीति आयोग. He appoints the CEO of Niti Aayog in his capacity as the Prime Minister of India. I hope you understand it. After the appointment committee on cabinet recommends the name of CEO of Niti Aayog, the Prime Minister goes ahead and appoints him. And Union Minister of Personal Public Grievance and Pensions, no. Usually Indian Administrative Services and civil service forces से related जितने भी appointments होते हैं, that is done by this union minister, but not not the CEO of Niti Aayog. So this is also the wrong answer. The correct answer is Prime Minister of India. Appointment committee of cabinet approves the name of the CEO, and after which the Prime Minister of India appoints the CEO of Niti Aayog. He is also the chairperson of India. But you all, I hope it is very, very clear that with which capacity the Prime Minister appoints the CEO of Niti Aayog. Okay. 1981 batch IAS officer रह चुके from UP cadre. We have already discussed it. We've already discussed this also. He joined civil services. So an interesting fact about the new CEO of Niti Aayog is that he is an IAS officer from 1981 batch cadre. 1981 batch from the UP cadre. In 2009 he took voluntary leave or voluntary retirement from the services, and he joined the water and sanitation works of the World Bank in 2009. So 2016 में इनको स्वच्छ भारत मिशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से यूएस से वापस बुलाया that okay, you work under स्वच्छ भारत mission, but then again in 2021 he resigned and went back to US to join World Bank again, and now he is working as the CEO of Niti Aayog. Okay, so this is the structural organization of Niti Aayog. Chairperson you all know, CEO you all know. Governing Council of the Niti Aayog is Chief Minister of all states and Lieutenant Governor of all the Union territories. So this is an example of what
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. नीति आयोग का वन ऑफ द की objective of Niti Aayog is cooperative federalism. With the key objective of Niti Aayog as cooperative federalism, we all should know that the governing council will obviously be comprised of all the chief ministers and LGs of the states and LGs of all the union territories. So अगर आपको ये याद रहेगा तो ये याद रखना बहुत obvious हो जाएगा. Regional council भी है, of course, grassroots development. वन मोर ऑब्जेक्टिव बॉटम अप अप्रोच अडॉप्ट किया है नीति आयोग ने, अनलाइक द प्लानिंग कमीशन अप्रोच ऑफ टॉप डाउन अप्रोच. टॉप अथॉरिटी से डेवलपमेंट प्लान्स, प्रोजेक्ट, फाइनेंसेस ट्रिकल डाउन होते थे. बट नाउ नीति आयोग एम्स टू एम्पावर लोकल बॉडीज एंड रीजनल बॉडीज टू एनहांस द डेवलपमेंट. सो रीजनल काउंसिल भी कंसिस्ट करता है, एड हॉक मेंबरशिप भी है, to involve the expertise of industry experts, from various fields into the policy making process. Ex officio membership meaning Union Council of Ministers, Chief Executive Officer, we have already done about it, and special invitees that are invited by the Prime Minister of India. So this is the entire Niti Aayog की website से screenshot है. So this is the major objective of Niti Aayog: monitoring and evaluation, think tank and knowledge, foster cooperative federalism, and design and policy framework. Okay. ये ऑब्जेक्टिव्स हैं नीति आयोग के, इनको एक बार ग्लांस कर लीजिए. डू टेक अ ग्लांस, नॉट रॉकेट साइंस, बहुत इजीली याद भी हो जाएगा. तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं नीति आयोग के. International Day Against Drug Abuse and Illegal Trafficking is observed on June 26. June 26 को ये डे ऑब्जर्व होता है. 1987 को रेजोल्यूशन लिया था UNGA ने टू ऑब्जर्व 26 जून एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज. इस साल का थीम है एड्रेसिंग ड्रग चैलेंज इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. ओके, सो दिस इज द 2026 2022 theme of International Day Against Drug Abuse. So resolution कब adopt किया था? UNGA ने resolution adopt किया था to observe this day. इसको also, it is also known as World Drug Day भी इसको बोला जाता है. So the correct answer here is 26th of June 1987. The correct answer here is 26th of June 1987 को. No, sorry. Correct answer ये नहीं है. Okay, this is not the correct answer. Okay, the correct answer here is 1st December. अगेन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, राइट? क्योंकि वर्ल्ड ड्रग डे सेलिब्रेट या ऑब्जर्व किया जाता है 26 ऑफ जून को, बट इसका रेजोल्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था दैट वाज डन ऑन 1st of December 1987. So that is why I have asked this question. That is the reason I have framed this question. आप बाकी ऑप्शंस देख के भी समझ जाओगे कि क्यों मैंने सिर्फ डेट्स के ही साथ खेला है. सिंपल क्वेश्चन है, बट क्यों मैंने डेट्स के साथ इसलिए खेला है क्योंकि रेजोल्यूशन इसका 1st December 1987 को ऑब्जर्व होगा, पास हुआ था टू ऑब्जर्व 26 जून डेट चूज करी गई है टू ऑब्जर्व एज वर्ल्ड ड्रग डे. क्यों चूज किया गया है 26? वाई ओनली 26 जून हैज बीन चोजन by the UNGA to observe it as World Drug Day? Do let me know in the comments below if you know about it. Okay. Hi Vinita, hi Dhruv Kaushal, hi Shivam Kulhare, good morning, how are you all? Very nice to have you all in the live session. Manpreet Kaur, hi, most welcome. The World Drug Day United Nations Office on Drugs and Crimes ने conduct करवाया है. Right, UNODC campaign है cares and cries, hashtag cares and cries. UNODC का campaign है on the World Drug Day of 26 June. Okay, UNGA has observed this as International Day on Drug Abuse and Illicit Trafficking. तो इंडिया के लिए ड्रग अब्यूज़ एंड वर्ल्ड ड्रग डे का क्या सिग्निफिकेंस है? वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इंडिया में भी ड्रग मेनेस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली व्हेन वी हियर अबाउट पंजाब.
Although overhyped है, but still Punjab, Haryana side and some of the South Indian states, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड जो स्टेट्स है वहाँ पे ड्रग अब्यूज़ का बहुत सारा इंसिडेंट्स हमको सुनने में आता है. So India is a country that is basically sandwiched between Golden Crescent and Golden Triangle. दोनों के बीच में sandwiched है. This Golden Crescent consisting of Pakistan, Afghanistan, Iran and West Asian countries and Bangladesh, Myanmar, Thailand. ये बहुत बड़े drug smuggling conglomerates यहाँ पे exist करते हैं. And they use the Indian Ocean to smuggle drugs and weapons, illegal drugs and weapons को smuggle करने के लिए. Now that promotes terrorist activities and terror financing and all that stuff. So that is why this day is even more crucial for India, because ये ना ही सिर्फ strategic and security threat है, but it will also hamper security, safety and health of the youth of our country. जबकि हमारे इंडिया में demographic dividend and average age is 28 years, youngest country in the world. So that is why it is very, very important. International treaties and conventions in now, given this scenario, India is signatory to many international treaties and conventions that aim to fight against the drug menace. Let's have a look. UN Convention on Narcotics, Drugs, Psychotropic Substances, NSTP Act implement करता है इसको, National Psychotropic Substances Prohibition Act. NSTP Act implements this treaty. Convention against illicit traffic in drugs, and again under the ambit of ये नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अंदर आ जाएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है. ओके. UN Convention Against Transnational Organized Crime, UNTOC. So these are some of the Ministry of Social Justice and Empowerment, they have launched the Anti-Drug Action Plan. Anti-Drug Action Plan launch किया है the Ministry of Social Justice and Environment ने. Ministry of Social Justice and Empowerment ने Anti-Drug National Plan launch किया है, along with its community outreach program named as Nasha Mukt Bharat. Nasha Mukt Bharat is the community outreach program that has been launched. Okay, and it is implemented by the Narcotics Control Bureau that comes under the Ministry of Social Justice and Empowerment. Iskander M missile. Iskander M missile recently Belarus को एक country ने transfer किया है. Now Iskander M missile is basically a launch system. It's not a missile, but it is a launch system जो कि both conventional as well as nuclear missiles को launch कर सकते हैं. Conventional means short range, long range ballistic missile, and nuclear warheads दोनों को ये launch कर सकता है. So this is transferred to Belarus by Russia. Russia is reeling under crisis. Ukraine, Russia, the world is reeling under Ukraine-Russia crisis. So उसी में एक छोटा सा news आया था. You can hear bunker buster munitions, cluster bombs, EMP. All this missile system was inducted in 2006. So obviously इतने complicated questions तो नहीं आएंगे, but हाँ पूछ सकते हैं that Iskander M missile is related to which country. Okay, so let's discuss about ऑब्जेक्टिव क्या है. जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस. तो जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था हमारी कंट्री में, तो उसी के साथ साथ जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस पे इंक्लूड किया गया था. आप पहले आंसर करो इस क्वेश्चन को कि ऑब्जेक्टिव क्या है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस का, एंड देन वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट. सो करेक्ट आंसर हियर इज बी. जीएसटी जितना भी लॉस एंड रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इन जीएसटी कलेक्शन, that is to be compensated from the GST compensation cess that is collected by the state governments. So जब 2016-17 में GST आया था, तो GST compensation cess का डेडलाइन was अगेन 2021 में लखनऊ में GST काउंसिल का मीटिंग हुआ था, and there the GST council decided कि 2022 is to be the deadline. 2022 is to be the deadline for GST council. Okay, but
Because of the impact of COVID-19, they have decided to extend GST compensation cess for 4 more years, that is till 2026. सो यही है, सिंपल सी न्यूज़ है कि 4 साल तक इसको एक्सटेंशन मिल चुका है, 2022 से लेकर 2026 तक. ओके, 1 जुलाई को ये रोल आउट हुआ था टू कॉम्पनसेट रेवेन्यू कॉम्पनसेशन. इसको रेवेन्यू कॉम्पनसेशन सेस भी कहा जाता है, टू कॉम्पनसेट द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर एनी लॉस इन रेवेन्यू. Okay, and though the protected revenue of states have been increasing at 14% growth rate, collection of the cess did not grow in the same proportion. Collection same proportion में increase नहीं हुआ, and this gap between protected revenue and actual revenue will further increase due to the COVID-19 pandemic. Okay, objective क्या था behind increasing the GST compensation cess? What was the objective behind increasing? Of course, you all know कि states में, state revenue में अगर कोई shortfall होता है, because GST is introduced by the central government, state government में अगर कोई shortfall होता है तो उसका adequate compensation दिया जाना चाहिए in light of cooperative federalism again. ये सारे कीवर्ड्स होते हैं, ये सारे कीवर्ड्स होते हैं कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, आंसर राइटिंग में अगर ये कीवर्ड्स आप यूज करके अंडरलाइन करोगे, इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. It was decided to be paid every 2 months on the basis of provisional accounts. Compensation cess 1 was created to pay the states for any shortfall in revenue. We have already discussed it. Okay, so this was it about the news. Okay. Static GK में important news आई है. Who has been chosen as the recipients of the Kempengoda International Award? So Kempengoda, actually Nand Prabhu Hiriya Kempengoda. He was the architect of Bangalore city under the Vijayanagar Empire. Vijayanagar Empire, Krishna Dev Rai, you all बहुत popular है. You know, विजयनगर एम्पायर. 1537 में नंद प्रभु केम्पेनगौडा was the architect. He supposed, he is believed to have been built the city of Bengaluru. उनके ऑनर में, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए अवार्ड दिया जाता है टू ऑल द रिनाउंड डिग्निटरीज एंड पीपल, एनी पर्सन हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सिटी इन वेरियस फील्ड्स. वी विल सी अबाउट इट. And the question is asking you, who has been chosen as the recipient? Now the award is being given to former Chief Minister of India of Karnataka, Chief Minister of Karnataka, Mr. S.M. Krishna. It has been given to Mr. N.R. Narayan Murthy, and it has been given to Mr. Prakash Padukone. Okay, founder of Emphasis N.K. Narayan Murthy, if you all know. Prakash Padukone, you all know who is he. Very, very popular. Okay, Brihad Bengaluru Mahanagar Palike. Brihad Bengaluru Mahanagar Palike basically confers this award to the eligible recipients. तो किसी भी फील्ड, यानी कि एजुकेशन, स्पोर्ट्स, मीडिया, जर्नलिज्म, इन सारी फील्ड्स में अगर किसी ने कंट्रीब्यूट किया है, स्पेशली इन बेंगलुरु और ऑल ओवर इंडिया, they are given this award. Okay, so this was it for the current affairs for today. Thank you so much for watching. Now this was the beginning. Dheere dheere start is small, but slowly and slowly we will be increasing the content, length and duration of this session daily. ट्राई करूँगी कि हर सेक्शन से डेली एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आर कवर्ड. अभी कभी न्यूज़ नहीं भी होती है तो वी कैन टेक अप सम रिविजन ऑफ एन ओल्ड बट वेरी इंपॉर्टेंट fact. So this was it for today. I hope you liked the new approach. I hope you found it very, very interesting. It will help you revise. It will help you maintain your notes. Okay, so thank you so much for watching. See you in the next class. Take care and bye-bye.